Assalamu alaikum, dear students of third grade. Dear students, open your English book at page number 65. You will see there one more poem, and the title of the poem is The Story of the Road. Let us recite this poem. You will listen carefully. Here I go. It's early morning, the road is asleep, everything is quiet, but listen. The birds are calling softly, chirp, 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 say the sparrows. Chirp, 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 caw, 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 says the crow. Caw, 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 wake up, wake up. Here is someone else now. Tring-a-ling, tring-a-ling. It's the newspaper boy. Tring-a-ling, tring-a-ling, says his bicycle. Tring-a-ling, wake up. Chirp, 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 say the sparrows. Chirp, chirp, caw, caw, say the crow. Wake up. Who is this coming now? It's the vegetable man. Peas, cauliflowers, cabbages, says the vegetable man. Potatoes, cucumbers, radishes, carrots. Caw, says the crow, wake up. Chirp, chirp, say the sparrows. Tramp, 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 chatter, 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 chatter. Who are these? They are children going to school. Chatter, 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 talk the school children. Tramp, 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 go their shoes. Peas, carrots, cabbages, calls the vegetable man. Chirp, 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 say the sparrows. Caw, caw, says the crow, wake up. Caw, 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 says the crow. Caw, caw, wake up, asks the road. Can't you see, you foolish bird? I am wide awake. This poem has been written by Polly Sengupta. In this poem, in the early morning, the road seems very quiet and there is calmness everywhere. As the sun rises, the poet listens different sounds on the road as different kinds of birds like crows, sparrows, etc. so that the people will wake up. Then the newspaper boy comes on the bicycle. He rings his bicycle. Then there comes the vegetable seller, and there are the talks of the school going children who pass through that road. प्यारे बच्चों, इस नज़म में शायर कहते हैं कि सुबह सवेरे, जिसको हम सुबह सादिक भी कहते हैं, उस वक्त जो सड़क है वो खामोश होती है, कहीं से कोई शोर नहीं होता है, लेकिन जो ही सूरज तुलू होता है, जो ही सूरज मशरिक से निकलना शुरू होता है, तो इस शायर को बहुत सारे किस्म की आवाज़ें सुनाई देती है इस सड़क पे। जैसे उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं परिंदों की चहचहाट उसको सुनाई देती है, जिसमें मैना है और जिसमें क्रो है। तो ये जो मैना या क्रो या बाकी जो दूसरे परिंदे हैं, इनकी चहचहाट का मतलब होता है कि नींद से जागो, यानी लोगों को ये इनकी चहचहाट जगाती है, यानी ये लोगों को अपनी इस आवाज़ से जगाते हैं कि अब सुबह हो गई है, अब नींद से जागो। फिर एक बच्चा आता है न्यूज़पेपर लेके साइकिल पे, और उसकी साइकिल से जो आवाज़ आती है उस रिंग की, उस बेल की, जिसको ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है, और ये भी लोगों से कहते हैं कि आप जाग जाओ, यानी साइकिल की जो आवाज़ है इससे भी जो है लोग जाग जाते हैं। इसी तरह से सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी लेके आता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लेके, और वो चिल्लाता है मटर ले लो, फूल गोभी ले लो, या बंद गोभी ले लो, आलू ले लो, ये जो खीरा ले लो, ये जो है गाजर ले लो, शलजम ले लो, शलगम ले लो। तो इसकी आवाज़ से भी जो है
لوگ جاگ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح جب آتی ہے تو جو سڑکیں سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو سڑکیں خاموش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سڑک پہ پھر جان آ جاتی ہے جب یہ مختلف قسم کے لوگ، چاہے انسان ہو یا جانور، ان کی آوازیں یہ جو سڑک سے آتی ہے۔ اسی طرح سے جو اسکول جانے والے بچے ہیں وہ بھی اسکول جاتے وقت ایک دوسرے سے چیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے موج مستی کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور ان کے جو قدموں کی آہٹ ہے وہ بھی لوگوں کو اور اگل بغل میں رہنے والوں کو جگاتی ہے۔ تو دس واز دی پوئم، اور جس کا نام تھا دا اسٹوری آف دا روڈ۔ انشاءاللہ اس کے جو کویشچنز ہیں وہ لے کے کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔